So fundamental rights. अभी तक what we have covered till now? We have covered till article number 11. Yes, we have covered till article number 11. आज हम बात करेंगे article number 11 के बाद की. Part 3 of our constitution. Part 3. Part 3 of our constitution is one of the most important parts of our constitution, that is the fundamental right. It is the very basic right, the very fundamental right. इसके बिना हमारा existence would be in question. Will be, if we in a free country, we are a free country, we are an independent country, a democratic society. So here also, if we do not have any right, so imagine what is the condition if we are not having any right in this country. Okay, so article 12 से लेके article 35 तक we will be discussing that what are the fundamental rights that we have. Yes, and these fundamental rights have been taken from where? These fundamental rights have been taken from the Bill of Rights. Yes, Bill of Rights. And this Bill of Rights stems from which country? Yes. Yes, I'm seeing right answers. Yes, the Bill of Rights. I believe that you have printed that chart, everyone. Yes, and you are learning from that chart. Yes, the USA. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये तीन चार चीजें हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में याद रखनी है. क्या? कि ये पार्ट 3 ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. दिस इज बोरोड फ्रॉम यूएसए. जस्ट knowing that ये यूएसए से लिया गया, इज इट इनफ? नो, इट इज नॉट इनफ. यू शुड नो इट स्टेम्स फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स. And is it true that we have taken something and as is हमने copy paste किया है हमारे constitution में? The answer is no. We haven't just copy pasted it in our constitution. Yes, we have Indianized it. We have borrowed the concept of this right. और ये कहाँ से कहाँ तक आता है? आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक. Okay, if you open your bare acts, you can see it from article number 12 to article number 35. Okay, and after this, which part comes after this? DPSPs. Yes, the directive principles of the state policy. यहाँ तक क्लियर है? बेसिक रूडिमेंट्री फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है. और ये फंडामेंटल राइट्स हमारे किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है? पार्ट 3 में. ओके, नाउ मूविंग ऑन. व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स. आई टोल्ड यू ये बहुत रूडिमेंट्री है, बहुत ही बेसिक है. ये बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स की बात करते हैं हम लोग. दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर एनफोर्सेबल लीगल राइट. एनफोर्सेबल का मतलब क्या हुआ? एनफोर्सिबल मतलब क्या हुआ? वी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. दे आर एनफोर्सिबल लीगल राइट्स. व्हाई दे आर डिजाइंड? हमारे प्रोटेक्शन के लिए. दीज आर डिजाइंड अगेंस्ट एनी आर्बिट्ररी एक्शन. आर्बिट्ररी एक्शन मतलब अगेंस्ट द लॉ, something according to their whims and fancies. So this is a protection. This is actually a shield. Imagine this fundamental right as a shield. So ये जो shield है हमें किससे बचा रहा है? स्टेट या किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल. ये स्टेट से हमें, वी आर इंडिविजुअल्स एंड दिस इज द स्टेट. एंड ये जो बीच में शील्ड है ना, दिस शील्ड इज द फंडामेंटल राइट. याद रखना, फंडामेंटल राइट इज अ काइंड ऑफ शील्ड दैट इज प्रोटेक्टिंग अस. प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट हुम? प्रोटेक्टिंग अस. इस शील्ड के पीछे जो है, शील्ड के पीछे कौन है? द स्टेट. ओके, क्लियर? Yes. Now talking about the constitutional purpose of these fundamental rights. So fundamental rights serve four core purposes. What are the core purposes of fundamental rights? हम state power को limit करते हैं. State power को limit क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम state power को limit? ताकि कोई arbitrary action न हो जाए कि हमारे against. ठीक है? हमारी freedom, ये जो शील्ड है हमें प्रोटेक्ट करे और हमारी जो फ्रीडम है, इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है, सिटीजन्स की जो फ्रीडम है, वो इन्फ्रिंज ना हो. ओके, protecting individual liberty, ensuring equality before law. Equality before law and equal protection of law. So equality is one of the 6 fundamental rights. Right to equality, yes. And maintaining the rule of law. अगर rule of law ही नहीं maintain होगा तो हमारी country कैसे चलेगी? Okay, so did you understand why is this shield so important? Yes, what is the constitutional purpose behind making the shield?
Yes, it is not just a political democracy. It is a democracy governed by a limited government. We are limiting what? We are limiting the arbitrariness of the government. ओके कि कोई भी अपने विम्स और फैंसी से कुछ भी नहीं कर सकता है हमारे अगेंस्ट. देयर इज अ शील्ड दैट इज प्रोटेक्टिंग अस एंड दिस शील्ड इज द fundamental rights which is given under part 3 of our constitution. Okay, so basic understanding is clear ki what is fundamental rights and why is it here. Now, why are we calling it fundamental? What is making it so fundamental that we need to call it fundamental rights? Okay. आप आपको पता है कोई भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो वी ऑलवेज से कि पहले यू शुड बी क्लियर विथ योर फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स आर द वेरी बेसिक और कोर प्रिंसिपल्स. ओके, तो आपका ये क्लियर होना जरूरी है. वैसे ही ये राइट्स हमारे क्या है, हमारे फंडामेंटल या बेसिक राइट्स हैं. दे आर फंडामेंटल बिकॉज इंडिविजुअल डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया है ये फंडामेंटल राइट्स. एंड व्हेन आई वाज टीचिंग यू द सिटीजनशिप, आई टोल्ड यू दिस सिटीजनशिप इज लाइक एन ID card, and this ID card is very important for us to live. So you'll see that there are some fundamental rights that are only available to the people who have this ID card, and this ID card is the citizenship of India. Yes, they are essential for individual dignity. They are constitutionally guaranteed. They are enforceable in the courts. They override inconsistent ordinary laws. Anything. इस पे we'll talk about a lot of doctrines that are there, but for now just understand that anything, कुछ भी ऐसा अगर law बनता है which is against what, the fundamental rights, so they will always override it. Okay, overriding effect मतलब कि if this is also existing but this will prevail over this. Okay, तो वो जो prevail का जो cycle है that is overriding effect. Okay, they form part of the basic structure of the constitution. Yes, part 3 of the constitution, the fundamental rights form part of the basic structure, and this was said in the landmark case of Keshwananda Bharti versus State of Kerala 1973. Time and again I am repeating the year because this is one such case जिसका year आपको हमेशा याद होना चाहिए. I will not accept any of my students coming up to me that you have made this this I will consider it as a blunder कि आपको केशवानंद भारती में क्या बोला गया, उसका ईयर क्या है अगर नहीं याद है. So this has to be remembered by all of my students, and all the students are actually of law. Now, what are the features of fundamental rights and why are these fundamental rights becoming so important? So the first feature that we'll be seeing here is they are justiciable, directly enforceable by the Supreme Court and the High Courts. 332 and 226. What are these? These are writ jurisdictions. I have talked about it and I have also told you a trick to remember this. Okay, it is binding on the state, primarily of enforceable. Yes, primarily मैंने क्या बोला कि वो एक शील्ड है, शील्ड के इधर हमें बचा कौन रहा है, स्टेट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, this fundamental right is the shield, and this shield is protecting us against what, the arbitrary actions of the state. Some rights are available to against private persons also. 15 clause 2, 17, 23 and 24. When we'll get to these articles, we'll discuss them. They are not absolute. Not absolute क्यों बोल दिया गया? Reasonable restrictions हैं. It is not absolute in nature. In certain circumstances, they are also infringed. They are limited. Okay. Uh, it can be amended, but क्या इसका basic structure destroy कर सकते हैं हम? नहीं. Negative and positive obligation. Sorry. The state must not violate rights, sometimes must actively protect them. Okay, so are you clear till here that what are fundamental rights, what are the features of fundamental rights, and why are fundamental rights so important for our entire being, and what is the role of that ID card, the citizenship that we are talking about? Okay, now ओरिजिनली, अभी ये एक पॉइंट याद रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. करेंटली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. मगर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 6 + 1. 6 + 1, वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स. Okay, we had 7 fundamental rights, but in the current day and age we have only 6 fundamental rights. And what is that one fundamental right that has been removed? The right to property. Right to property
And this has been removed by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. And how have I told you to remember the year of the 44th Constitutional Amendment Act? 4 plus 4 is equal to 8. Okay? So it is 1978. And 42nd का year क्या है? 1976. I always encourage the students तो आप यहाँ पे ये पढ़े 44th का year 1978 है. आप तुरंत recall करो 42nd is also so important. So what is the year of the 42nd Constitutional Amendment Act? And 42nd का year हम लोग कैसे याद रख रहे हैं? 4 plus 2. It is 6. The year is 1976. Okay, these little tricks will take you a long way. So right to property was removed by the 44th Constitutional Amendment and it is made a constitutional right. तो अभी ये constitution में कहाँ पे है? Article 300A में. Okay, clear? Good. Now, we have six categories of fundamental rights: the right to equality, the right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. So, 14 से 18 तक we can see right to equality, 19 से 22 right to freedom, okay, 23 and 24 is right against exploitation, 25 to 28 is right to freedom of religion, 29, 30 educational rights, and this is constitutional remedies. Clear? Now, against whom? We said it is enforceable. These rights are enforceable and justiciable. तो हम ये enforcement किसके against कर सकते हैं? हम ये enforcement state के against कर सकते हैं. State बोले तो अभी we'll discuss thoroughly that who is a state, who is not a state. But state बोले तो government bodies. Okay, just for a rudimentary understanding, I'm telling you. Yes, therefore Article 12. ओके, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जिसके अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट्स यूज कर सकते हैं, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट हु आर दिस पीपल जिसके अगेंस्ट हम ये फंडामेंटल राइट्स यूज कर रहे हैं. एम आई राइट? ओके, सिंपल. यस. Yes, yes, state is defined at 2 3 places. Yes, good Ankita. Yes, Shubh. Okay. So, article number 12. Pehle, I would suggest that we should focus on what we are covering right now and then later we'll understand and develop our understanding better. Okay. So, Article 12 is a foundational part of Part 3 of a constitution, which is a part of fundamental rights. Okay. So let's see article number 12. अभी इस point पे I want you all to open your Bare Act and open article number 12. Okay. ऐसे कैसे simple सा और छोटा सा article है, but it has a grave and important meaning that we'll understand. So in this part, unless the context otherwise requires, state includes what? The government and parliament of India, the government and legislature of each state. क्या मैंने बोला? For rudimentary understanding मैंने भी क्या बोला था? Government को मानो आप state. So government and parliament of India, government and legislature of each state, and then all local and other authorities within the territory of India. All local, okay, all local authorities within the territory of India. Last point, the other authorities, sorry, the other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. ये पूरी story जो है ना, the entire story revolves around कि other authorities में कौन आएगा, who will be included in the concept of other authorities and who will not be considered a part in the other authorities. So the story actually डेवलप्स हियर. अभी तक तो सब कुछ क्लियर है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इतना सबको समझ रहा है. पर क्या क्वेश्चनेबल पार्ट है कि ये अदर अथॉरिटी बोल के इसको क्या कर दिया, बहुत ब्रॉड कर दिया है. And we need to understand that what is actually the other authorities that we are talking about here. Okay. So
It is inclusive and not exhaustive, expands the scope beyond the traditional government. क्यों? क्योंकि ऊपर के 3 points में we were talking about traditional governments. जैसे ही we have added the term other authorities, we are moving beyond this scope and we are broadening the scope. ये definition applies only to part 3, that is the fundamental rights part, designed to prevent the state from evading constitutional responsibility. Okay. Now let's understand that what is the state and Article 12. First point, firstly understand it talks about government and Parliament of India. Yes, government and Parliament of India it's talking about. Now, in this government and Parliament of India, it includes what? Ma'am, do we need to cover all the articles from the Bare Act as well? Yes, definitely. I'll not say that you need to learn all the articles from the Bare Act as is, but you need to read the Bare Act with me while we are doing it in the class. And after the class, you can give it one reading. And you should know that what is Article 12 and what is Article 12 actually talking about. So, without a Bare Act reading, this can never be clear, okay? Okay, thank you. So let's talk about the components of the state government and the Parliament of India. It includes what? It includes Union Executive और Union Executive में कौन आता है? President, Prime Minister, Council of Ministers, Union Legislature, Lok Sabha and Rajya Sabha. Government and legislature of each state, state executive, governor, chief minister, council of ministers, legislative assembly and legislative council. There is one question for everyone. I have discussed it earlier also. I want you all to answer me that how many states in India have two houses. State legislature में two houses कितने states के पास हैं? Okay? Both legislative assembly and legislative council, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. There are how many states to have both the houses? Okay? Yeah. You can answer me in your WhatsApp group. Okay, now talking about local authorities. Local authorities कहाँ पे आ गई? Local authorities आती हैं. This definition should be taken from 331 of the General Clauses Act of 1897. Local authorities में आ जाएगा municipalities, panchayats, district boards, municipal corporations, improvement trust. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? स्टैट्यूटरी क्रिएशन होना चाहिए, क्रिएटेड बाय लॉ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शंस होने चाहिए, पावर टू लेवी टैक्सेस हो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हो. क्या पूरी जगह में? नहीं, डिफाइंड लिमिट्स के अंदर दे कैन एक्सरसाइज देयर ऑटोनॉमी. यस, एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल हियर? एनी प्रॉब्लम? ओके. यस, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट? मैम, व्हाई is other authorities mentioned? Other authorities is mentioned actually to broaden the scope. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का काम क्या है? फंडामेंटल राइट्स का काम है कि हमें एक तरह का प्रोटेक्शन देना. प्रोटेक्शन हम किसके अगेंस्ट दे रहे हैं? स्टेट के अगेंस्ट. तो अब मानो अगर स्टेट की डेफिनेशन ही बहुत नैरो है तो हमारा प्रोटेक्शन भी, द शील्ड ऑल्सो बिकम्स थिनर इफ द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज सो थिन. Yes, therefore, we need to have a broader perspective towards what is a state so that our shield can be thicker, our protection can be better. Is it clear? Is it clear, Priya? Okay, good. Now, moving on. What is authority? अदर अथॉरिटी समझने से पहले हम समझेंगे अथॉरिटी क्या है. अथॉरिटी का मतलब होता है आर्टिकल 12 में अथॉरिटी मींस एनी बॉडी दैट इज एक्सरसाइजिंग लीगल पावर, पावर टू मेक रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाय लॉज, हैविंग पावर ऑफ द फोर्स ऑफ लॉ. ये पावर जो है इनके पास, it should be backed by law, it should be legally sanctioned, power to affect the rights of the citizens. That is what a authority is. Now let's understand what is other authority का मतलब सबको clear है? Any problem? Okay, so good. Now moving on to what is other authorities, because I am telling you from so long that other authorities का concept is the concept that has actually broadened the scope of article number 12. Yes. तो जुडिशरी ने अपने जजमेंट्स के थ्रू इसको और ब्रॉड किया है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म. ओके, क्लियर? कोई डेफिनेशन आपको दिख रही है आर्टिकल 12 में? कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दिख रही है? ओके,
So the constitution is not defining the other authority kya hai. The meaning has evolved through case laws. Early interpretations, if we see, then there is this case of University of Madras versus Shantabai. University of Madras versus Shantabai mein kya hua? It was a 1954 case. In this case, it was held that other authorities means authorities exercising sovereign functions. इट इज अ नैरो इंटरप्रिटेशन. मान लो कोई अथॉरिटी है जो नॉन सॉवरेन फंक्शंस भी कर रही है. ओके, सो क्या वो अथॉरिटी में नहीं आएगी? शांताबाई के टाइम पे अगर हम चलते हैं, अगर शांताबाई का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, तो सिर्फ वही अथॉरिटी अदर अथॉरिटी के एम्बिट में आएगी दैट इज एक्सरसाइजिंग sovereign functions. If you're not exercising, you're not a part. So this is a narrow interpretation. Now the case came Rajasthan Electricity Board versus Mohan Lal. Abhi last case was of the year 1954. Now we have come up to the year 1967. Now in this case, what happened was other authority में statutory bodies को include किया. सॉवरेन फंक्शन इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे जो शांताबाई का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर सॉवरेन फंक्शंस कर रही है बॉडी तभी वो अदर अथॉरिटीज में आएगी, दैट वाज रिजेक्टेड. ओके, एंड एनी बॉडी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट विद पावर टू इशू बाइंडिंग डायरेक्शंस. अगर यू हैव द पावर, द अथॉरिटी हैज द पावर कि वो कोई भी ऐसा डायरेक्शन दे दैट इज बाइंडिंग, बाइंडिंग अपॉन whom? Binding on the citizens, then that authority will come under article number 12 as other authorities. Okay, yes. Now this यहाँ शांताबाई तक मान लो this was a very narrow path. अभी electricity board से the path has started to broaden. Okay, clear? Now, what is the instrumentality and the agency test? Now, it's a very, very important and famous case, R.D. Shetty versus International Airport Authorities. Okay, 1979 case, the R.D. Shetty case. I believe everyone is aware about this case. Now, I have not taken the case of Ujjambai. After Shantabai, there is also one more case. Let's just add it. Sorry. Okay. So if you want, you can write it in your notes. आफ्टर शांताबाई आप एक उज्जमबाई का भी केस लिख सकते हो एंड द ईयर इज this is the kind of additions I always encourage you all to do it on your own in the notes also. 1962. अभी इस केस में क्या हुआ? उज्जमबाई के केस में, उज्जमबाई के केस में इजस्टम जनरिस अप्लाई नहीं हुआ. कौन सा प्रिंसिपल नहीं हुआ? इजस्टम जनरिस. एंड व्हाट इज इजस्टम जनरिस? कैन एनीवन प्लीज टेल मी? Very right, very good, Shobh. The meaning of adjustum generis is of the same kind. This was not applied. So you have to remember this case. And what are the more details of this case? You will write it to me in the WhatsApp group. Okay. So we went from Shantabai to Ujjambai, then Electricity Board, and now the very important case, that is the R.D. Shetty versus International Airport Authorities case. Agency and instrumentality test. Agency and instrumentality test of the government are state. Okay, कि कौन सा पार्ट स्टेट है नहीं है, 12 में आएगा नहीं आएगा, इसके लिए एक टेस्ट आया और वो टेस्ट क्या था? एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट. अभी इसको कैसे याद रखेंगे? हाउ कैन वी रिमेम्बर दैट द एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट यहाँ पे लगाया था? वी कैन रिमेम्बर कि वी आर बुकिंग एयरपोर्ट टिकट्स थ्रू एन ट्रैवल एजेंसी. एयरपोर्ट टिकट्स हमने कैसे बुक की है? ट्रैवल एजेंसी से. अभी इस ट्रिक से हमें एयरपोर्ट गए, हमने टिकट्स लिए ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, तो वील रिमेंबर द एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट वाज एक्चुअली applied over here, and Justice P.N. Bhagwati talked about indicators and their significance. एंटायर शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, अगर सारा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के ही पास है, तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल आ गया गवर्नमेंट के पास. डीप एंड परवेसिव कंट्रोल. डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का मतलब क्या? कि एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस किसका है? क्या गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस है उस बॉडी पे?
पब्लिक इंपॉर्टेंस फंक्शंस, पब्लिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंट रोल में आ गए, मतलब गवर्नमेंट जैसा रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे कि इट इज ऑफ नेचर, नेचर कैसा है उस रोल का कि पब्लिक फेसिंग है, पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कन्वर्टेड इनटू कोऑपरेशन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट फंक्शंस, यस इट वाज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मगर वो कोऑपरेशन में चेंज हो गया, मगर फंक्शंस तो स्टेट के ही हैं। मोनोपोली स्टेटस ग्रांटेड बाय द स्टेट इंडिकेट्स कि आपके पास बैकिंग है, बैकिंग अगर किसकी है, स्टेट की, तो आप अदर अथॉरिटीज में आते हैं। सो इट इज नॉट अ वेरी रिजिड टेस्ट बट दीज आर द गाइडिंग फैक्टर्स, और ये गाइडिंग फैक्टर्स हमें अदर अथॉरिटीज आर्टिकल 12 के लिए कौन सी एजेंसी से मिला, हमने एक टिकट, एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक की एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, so we can remember it as आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटीज टेस्ट। एजेंसी एंड, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आ गया कि द एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट से किस केस में जज किया गया था, so always remember RD Shetty versus International Airport Authority. And again, one such year I want you to remember 1979 is the year of the case. Okay. Now, let's talk about Ajay Hasia. Ajay Hasia versus Khalid Mujib. Ajay Hasia is also a famous case. अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस दी गई। क्या क्लैरिफिकेशंस दी गई कि मान लो कि कोई सोसाइटी है दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इट कैन बी अ स्टेट, form of cooperation is irrelevant, substance and control matter, and what matters is whether the body is an instrumentality and agency of the government। और इससे हमें कौन सा केस याद आया, शेट्टी, आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटीज। अब यहां तक तो वी हैव टॉक्ड अबाउट, ओके, यस बोथ आरडी शेट्टी एंड अजय हासिया, वो 79 का था, ये 80 का था, दोनों ही केस में एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी की बात की गई है, ठीक है। एंटायर शेयर कैपिटल, एंटायर एक्सपेंडिचर, मोनोपोली स्टेटस, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, यस इन सारे पॉइंट्स की बात की गई है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द अथॉरिटेटिव टेस्ट। अब अथॉरिटेटिव टेस्ट में क्या कहते हैं, हम लोग बात करेंगे केस की जिसका नाम है प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002, प्रदीप कुमार बिस्वास, ओके। सो इस केस में क्या हुआ, बट बिफोर कमिंग ऑन टू दिस आई वांट टू गिव यू अ नेम ऑफ अ केस, राइट इट डाउन, द केस नेम दीपचंद, no not Deepchand, sorry. The name of the case is AR Antule versus RS Nayak. AR Antule. Just write it here actually. I'm writing it down. AR Antule versus RS Nayak. Year is 1988. Now this is something that you will do. You'll find out this case and you'll tell me that in this case what was said, who was held to be a state. Okay? Now let's talk about the authoritative test. Authoritative test में कौन सा case हुई? The first case that we'll be dealing with is the Pradeep Kumar Biswas versus Indian. Yes, the recording will be provided to you of the class. Yes. But I encourage you to make running notes through the class. Because the notes will not be provided, the recordings will be provided through which you can make your own running notes. Authoritative test. Now, authoritative test में पहला case that we are talking about is Pradeep Kumar Viswas versus Indian Institute of Chemical Biology 2002. Now, here what happened? Constitution bench clarified the law. What is the law that the bench has clarified? That whether a body is financially and functionally administered and dominated under the control of the government, control must be deep, persuasive and particular, DPP. DPP. Why? बिकॉज कंट्रोल का नेचर बताया कि गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है, पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा होना चाहिए, अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए, ये किस केस में हमें बताया है? द केस इज प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ओके। यस, mere रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी कंट्रोल इज इनसफिशिएंट, सिर्फ इतना है तो क्या वो अदर अथॉरिटीज में आएगा? द आंसर इज नो, ओके। सो दिस इज द टेस्ट, दिस द टेस्ट दैट वी आर फॉलोइंग टुडे,
आज की डेट में in 2026 the test that we are following is the authoritative test, and this authoritative test can be understood by which case? Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology 2002. Okay. Now there are some private bodies under Article 12 also, like there is this case Z Telefilms versus Union of India 2005. Now whether BCCI is a state or not, तो इसमें बोला गया कि बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 24। क्यों? क्योंकि कोई डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल नहीं है। अभी क्या हमारा कंट्रोल का नेचर क्या होना चाहिए? डीपीपी। तो बिकॉज वी डोंट हैव अ डीपीपी ओवर बीसीसीआई, सो देयरफॉर इट वाज हेल्ड दैट इट इज नॉट अ state. However, high courts can still issue writs under Article 226. So you need to remember. And जब ये आया ना आपके पास कि हाई कोर्ट 226, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में ऐसे क्लिक होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। Yes, if a private body performs public functions, तो ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई completely immune हो जाता है, नहीं। If it is performing public functions, writs can be issued against it. Now this is a very very important case, and it was like a, it is generally a question also, that what do you think, is judiciary a state under Article 12 or not? सिंपल, एकदम सिंपल वन लाइन आंसर आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम बात कर किसकी रहे हैं। इफ वी एम टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी ऑफ द कंट्री, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी। तो इमेजिन दैट इफ जुडिशरी इज इन अ प्लेस टू डिलीवर जस्टिस, व्हाट इज दिस? जस्टिस डिलीवरी का काम है। So whenever this function is to be performed, I am delivering a justice. So I have to be unbiased in my approach. So can I be a state here? The answer is no. So whenever judiciary is doing a judicial function, it will not be a state. It will not be a state. But if you are doing any administrative function, किसी का hiring कर रहे हैं, कोई clerk hire कर रहे हैं, record keeping का काम है, anything which is not of the judicial nature, तो उन circumstances में judiciary will be a state. Yes? Okay. I don't want to bombard you with too much content for today. So I will be stopping this session here. Okay. Thank you everyone for joining today's class, and I hope that you have understood the concept of Article 12 thoroughly. If you have any problem, you can always contact us through our WhatsApp medium. एंड अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया है, प्लीज गो एंड गिव योर टेस्ट। वील start our next session tomorrow again. We'll be meeting tomorrow again, and we'll be trying to cover fundamental rights as much as possible in this week. Okay, so thank you everyone. Thank you.